कैसे बाल हो रहे हैं लोग को मुझे। Okay, and so we are back once again. यहाँ पे okay, so let's just, I guess there's nobody here currently. Zafar Siddiqui, please reply. Well, hi. Okay, अभिनव कुमार भाई, SHM not valid in vacuum. Well, SHM vacuum में work करता है, बस acceleration due to gravity होनी चाहिए. But if we are talking about space and stuff, तो obviously वहाँ पे work नहीं करेगा. That's not acceleration due to gravity. Quantic, why we cannot say about a light photon entering in water will reflect or refract? Well, अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट वेव्स जब वाटर में इंटर करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं, रिफ्रैक्ट भी करती हैं मोस्ट केसेस में. इनफैक्ट लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है. एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि लाइट रिफ्रैक्ट जब करती है तो रिफ्लेक्ट तो करती ही है. बहुत स्पेशल केसेस में होता है कि जब रिफ्रैक्ट करेगी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी. ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करे रिफ्रैक्ट ना करे. Harshvardhan, which anime are you watching nowadays? Well, I've been watching Assassination Classroom and Classroom of the Elite. समदानी खान, सलाम का जवाब दे दो भाई. वेल, वालेकुम अस्सलाम. निर्मल खान, hello. Okay, quantic. I asked about particular photon. क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली पर्टिकुलर फोटोन के लिए हम लोग तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं. एंड सो अगर पर्टिकुलर फोटोन की बात करें सो आई गेस आई डोंट नो कि किसी पर्टिकुलर फोटोन के लिए हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट नोबडी नोस. Harshvardhan Ayanokoji has an IQ of 280 and he is only 17. Well, that's true. Apurva Pandey, how's connection is unstable again. Okay. Here was a question. Actually, it went. Okay, Apurva Pandey, how is acceleration a vector quantity as it doesn't show any direction? Well, actually, acceleration direction को बताता है कि किस direction में velocity change हो रही है. That is the direction of acceleration. मतलब velocity increase कर रही है, decrease कर रही है, तो इस पे depend करके and velocity actual में दो factors पे depend करता है. Velocity की initial direction क्या है and velocity increase या फिर decrease कर रही है and उसकी उसी factors पे based acceleration यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. सो इट एक्चुअली डज रिप्रेजेंट डायरेक्शन. हैप्पी आस्क व्हाई देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर. वेल, जब हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वी नो कि उसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे व्हिच वी डोंट नीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. रादर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी स्टडी विद चार्जेस एट रेस्ट. इट्स बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि जब इस कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की. इफ यू वांट द डिटेल्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो so that is something like a little bit more detailed explanation and of course will require graphs and stuff. But let me tell you कि electric field basically at every point on the surface of the conductor be perpendicular to the surface होनी चाहिए and inside the conductor zero होनी चाहिए. तो अगर electric field inside zero है
किसी भी गॉसियन सरफेस को इनसाइड चूज करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेट चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस जीरो होनी चाहिए. So we can perform this Gaussian surface वाली चीज over the entire conductor by getting it small and small till we reach to a point जहाँ पे हमें पता चलता है किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. Hack with Techno Boy. Is HC Verma enough for JEE Mains? Any other suggestions will be really helpful. Well, HC Verma actual में JEE Mains के लिए enough है. Nirman Khan, what is geometry? Geometry अगर बात करें so you ask us something like tough question. What is geometry itself? But rather, what I will say that geometry is the study or the branch of mathematics that deals with stuff like lines and you can say shapes and the equations relating different shapes in mathematics. That's what I can particularly say. Vikas Kalwa, what is the maximum value of power factor? Depends on what you mean by power factor. अगर पावर फैक्टर आप बात करें स्पेशली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, सो बेसिकली दैट इज कॉस, तो वो पावर फैक्टर एक्चुअल में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन, तो ऑब्वियसली 1 होगा. Aswathi Sri Kumar, what is the Lorentz transformation? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, ये एक्चुअल में कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो कि लॉरेंस ने पब्लिश किए थे, जो कि डिफाइन करते हैं कैसे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है उसके लिए स्पेस एंड टाइम इफेक्टेड होते हैं. जस्ट सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर रियली हेल्पफुल. एंड एक्चुअल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंस की कैसे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हमारी लेंथ डिफर कर जाती है, यानी कि स्पेस कैसे वैरी करता है एंड टाइम कैसे वैरी करता है. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक बेसिकली जब उन्होंने ये रिजल्ट पब्लिश किया तो वो ये क्वेश्चन ही आंसर कर पाए कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि टाइम को स्लो कर रही है एंड लेंथ को शॉर्ट कर रही है. तो आइंस्टाइन ने इसका जवाब दिया था कि इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि बेसिकली ये कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही बल्कि स्पेस एंड टाइम का नेचर ही ऐसा है. दिस इज द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ दैट्स गेटिंग दिस थिंग टू बी डन. Nirman Khan, what are shapes and how is geometry related to shapes? Well, yeah, just asking another difficult question. Shapes, you can say, how do I define it? I'll just think over it, right? Okay, what are shapes themselves? Again, that is Vikas Kalwa. What is the maximum value of power factor? Well, obviously, I said power factor maximum value is 1. Aditya sir, from which book did you start reading physics? Actually, मैंने physics start किया था from the book A Brief History of Time by Stephen Hawking. That was, लेकिन अगर text book की बात करूँ, so I started it from Concepts of Physics by H.C. Verma. Divyanshu, how to study maths of 10th and 11th? Please tell, please tell. That's all repeated. अगर आपको तो पहले तो आपकी 10th की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए. फिजिक्स में इट इज नॉट दैट यूजफुल. मैथ्स में एक्चुअल में 10th की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए. एंड just take the NCRT and start reading it. At first you might not understand, but at time you'll understand. It is just simple. Vikas Kalwa, what is the RMS value? Now again, I guess the question is incomplete. क्योंकि RMS value of what? Actually में RMS की different values आती हैं, मतलब different quantities होती हैं of root mean square. क्योंकि RMS का मतलब ही that is root mean square. तो बेसिकली ये डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए हो सकता है. थर्मोडायनेमिक्स में आरएमएस स्पीड की बात करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग से आरएमएस इवन करंट की बात करते हैं, आरएमएस वोल्टेज की बात करते हैं. सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय आरएमएस. प्रतीक,
Thopati, something about Ramanujan equation of black hole. Well, actually, I don't know since I'm not that much great in mathematics or something. But I would also say कि actual में Ramanujan ने जो equations दिए थे, they were not specifically for black hole. Rather, वो equations help करते हैं for understanding black hole. ओके, टुनटन यादव, गॉस थ्योरम किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो बेसिकली हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करते हैं एंड उस सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस, रिमेंबर क्लोज्ड सरफेस, डिवाइडेड बाय में द constant that is permittivity of free space, 8.85 into 10 power minus 12 farad per meter. Mustajab Ali Chaudhary, why gravity is so weird? Wired. Yes, you tried. You are mean to say weird, right? Well, actually, gravity depends on from which perspective are you saying that gravity is weird. But indeed, it is interesting, and we don't know everything about gravity yet. हम लोग के पास general theory of relativity है, but we can't understand gravity at a microscopic level yet. So we actually don't know. Okay. Ashmit Khare, when are you giving IIT JEE exam? When are you giving IIT JEE exam? Well, I actually don't plan to give or something, but since it's 2022 currently, I guess I'll be giving it in 2027. Irman Khan at the rate of Tejas. Hello. Well, guess Tejas is here for a long time. Abhi Kumar. Okay, that's Tejas. Hi, hi. Abhi Kumar. Hi, bhai. I'm from Kushinagar. What is twin paradox? Well, twin paradox is basically just say another effect of the special theory of relativity. कि ट्विन पैराडॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि से यू हैव टू ट्विन्स, आपके पास दो ट्विन्स हैं, उसमें से एक क्या जाता है कि एक स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करना शुरू कर देता है एंड आफ्टर फ्यू इयर्स इन अ ट्रेन और इन अ स्पेसशिप और समथिंग, and basically फिर what they observe कि when he stops moving after few years at the speed of light, देखेंगे कि उनकी एज सेम नहीं होती है। इनिशियली दे वर ट्विंस बट दे आर नो लॉन्गर। ये बेसिकली होता है क्योंकि जो मूव कर रहा था उसके लिए टाइम स्लो हो गया था एट द स्पीड ऑफ लाइट, वाइल जो रेस्ट पे था अर्थ पे था उसके लिए टाइम उसी रेट से चल रहा था। सो इट इज नथिंग बट जस्ट अनदर इफेक्ट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल रिलेटिविटी कि टाइम इज गेटिंग slowed down. Nirman Khan, how was that three dragons meme? Well, it was quite interesting and even relatable. Okay. AK Adi 100K. What is dark matter? डार्क मैटर वो इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर है इन अ यूनिवर्स जो कि हम लोग देख नहीं सकते एंड इट एक्चुअली इंटरैक्ट्स विद अदर मैटर यूजिंग द विद द ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बाकी मैटर से इंटरैक्ट करते हैं बट नॉट थ्रू अदर फोर्सेस लाइक यू हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यू हैव वीक न्यूक्लियर फोर्स, you have the electromagnetic force. So we don't exactly know what is dark matter, in which form does it exist. All we know it is the matter that is invisible to human eye and that we can't see, but yet it has a अगर इसकी परसेंटेज कंपेयर किया जाए तो it is more in quantity than the ordinary 5% matter that we can see in our universe. ध्रुव संगवन, व्हाट इज इनसाइड अ ब्लैक होल? वेल उस पे मैंने एक वीडियो बनाया, इफ यू वांट समथिंग लाइक अ डिटेल आंसर और समथिंग यू कैन गो और वॉच दैट। अगर एग्जैक्टली बात करें वी डिफाइन की ब्लैक होल के सेंटर पे एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड द सिंगुलैरिटी पॉइंट, जहाँ पे सारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स लाइक जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं एंड हम लोग फ्यूचर या फिर वहां पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ सिंगुलैरिटी पॉइंट वेयर ऑल द मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉज आर ब्रोकन डाउन and we actually don't know what exactly is there. Happy hours, is there any difference between position and displacement time graph? एक्चुअल में मैंने पोजीशन ग्राफ्स तो बहुत देखे हैं लेकिन आई गेस आई नेवर एग्जैक्टली सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कैसे उस पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करिए, मतलब ये इन अ वे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करिए। सो इट्स क्वाइट समथिंग लाइक weird kind of thing, as you might say. The velocity is time derivative of position, not displacement. Remember, that's why position time graph की slope velocity होती है, not of displacement time graph. I guess I haven't ever even seen a displacement time graph. Study wala, what is reflection of light? Well, it is the process in which light is reflected upon striking any surface, जो कि कुछ cases में opaque हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी होगा कुछ लाइट, उससे रिफ्रैक्ट कर जाती है, मतलब कुछ लाइट क्या करती है कि उससे ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन जो बाकी की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब बाउंस बैक कर जाती है। एंड इसके कुछ लॉज होते हैं, लाइक ये जो इंसिडेंट रे जो कि फॉल करती है, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल डिफाइन करते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर, वहां से नॉर्मल डिफाइन करते हैं, एंड हम लोग डिफाइन करते हैं द रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, एंड इसके साथ जिस एंगल रिलेटिव टू नॉर्मल यहाँ पे जो हमारे इंसिडेंस रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करती है। तो दिस इज दीज टू लॉज आर टुगेदर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay. Okay. Here was a question. Yes. Huh. Samarth Patil, please review DJ Griffith's electrodynamics. Well, actually, I haven't read Griffith's electrodynamics. हाँ, but I have read Griffith's quantum mechanics. उनकी जो introduction to quantum mechanics है. Indeed, I haven't read it full, but I have read a little part of it. But I found it to be so brilliant. मतलब जो Griffith की quantum mechanics है, it is really a great, a brilliant book as far as I can say. रिलेटेड टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो मैंने अभी बहुत डीप लेवल पे स्टडी भी नहीं किया हूँ, बट रादर अगर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, सो आई हैव बीन लाइक रीडिंग जैक्सन्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके Okay, Nirman Khan, displacement time graph is just the initial position subtracted from the position time graph. Well, yeah, that's true. But what I find complicated is to visualize this kind of thing. I guess it's a little bit hard to visualize it, especially when you're live streaming, and it requires little bit mental effort. But yeah, I'll try drawing it something at least. But what I find is that it isn't quite that useful. Sasta Doraemon. Mass can neither be created nor be destroyed, but at beginning universe was created. So how is it true? Well, उसमें energy release हुई थी जो कि mass के form में convert हुई. That is how we define it. But from where did the energy come? We don't know. अरमान अरोरा, सॉरी सारिम सर, पहले स्ट्रीम रुक गई थी। प्लीज टेक माय क्वेश्चन अगेन, recommend physics book for JEE Advanced 2023. Well, yeah. बेसिकली जे एडवांस 2023 के लिए तो कुछ पॉसिबल केसेस लाइक आप या तो अभी 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो। इस केस में व्हाट आई विल से इज आप HC वर्मा सॉल्व करो। पहले तो अपने मॉड्यूल्स एंड डीपीपीज लाइक दे आर पर्टिकुलरली डिजाइन, तो अगर आपने वो सॉल्व किया देन यू शुड गो फॉर बुक्स। बुक्स में अगर बात करूं तो आप HC वर्मा आप सॉल्व करो, लाइक बहुत ही कंसाइज है, कम क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसमें फिजिक्स अच्छी खासी कवर होती है। So you can solve HC Verma, and apart from that अगर आपको चाहिए like you have solved that और आपके पास और भी टाइम है, then go for Erodo, लेकिन selected questions, पहले आप selected questions solve कर लो, because it might be the case आप you have limited time, and अगर आपको पता है आप में potential है कि पूरी book solve कर सकते हो, just solve it, so it won't be that useful in JEE Advanced. Erodo useful होती है but not all the questions. Bhavansh Garg, what is polarization in web optics? Well, it's just similar to that. It's actually a kind of phenomena that is also related to optics and also to electromagnetism. आपके पास कोई भी वेब है, यहाँ पे एक वेब ट्रैवल कर रही है। Obviously हम लोग जानते हैं एक वेब क्या है. It is just a disturbance.
अगर एक ट्रांसवर्स वेव की बात करें, पहले एक ट्रांसवर्स वेव देख लेते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट? कुछ ऐसे। अगर ये ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करिए, तो इसके डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स वेव है कहाँ होंगे? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट अप एंड डाउन होंगे। तो जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स अप एंड डाउन बोल होता है, तब हम लोग बोलते हैं ये वेब इस एक्सिस के अलोंग पोलराइज्ड है। लेकिन रिमेंबर, जब ये मोशन सिर्फ अप एंड डाउन होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट भी किसी दूसरे प्लेन में होगा, लाइक इधर भी, तो उस केस में इस प्लेन के लिए हम लोग बोलते हैं इस प्लेन में पोलराइज्ड है। मोस्ट केसेस लीनियरली पोलराइज्ड आप देखोगे। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, उसमें सिमिलर टू ट्रांसवर्स वेव, लेकिन सिंस हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज व्हाट, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है? परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम लोग बोलते हैं कि ये वेव उस से डायरेक्शन के अलोंग लीनियरली पोलराइज्ड है। दैट इज, अगर से यहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है एंड यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो वी से अलोंग दिस डायरेक्शन ये पोलराइज्ड है। Nicola, at the rate of is why are protons combined with neutrons? Well, it is just कि उन्हें neutrons के साथ combine किया गया। हाँ, so basically what is कि वो अभी भी क्यों combined है? That's the question. I can actually answer that क्योंकि वो strong nuclear force से connected है। But if you are asking why they are combined with like neutrons, not electrons, why neutrons are not combined with electrons? So I don't know. That was just God's wish, maybe, and he did it. Yeah, Samant Patil. Bro, Jackson math is god level. How do you handle vector calculus? Well, I have been also learning like vector calculus. I've been learning it. So I haven't completely like solved Jackson's yeah, you can say electrodynamics. Rather, I'm just starting it recently. So, and I was actually particularly these days studying a book called University Physics, an introductory level undergrad textbook, and I'm just about to finish it. So after that, after just finishing this book in uh, say few weeks, something like that, a week, as you can say, I'll just try for other books. Something like Feynman lectures. I can just fully, you can say, dwell in that kind of thing. Okay. अरमान शर्मा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का हम लोग डिफाइन करते हैं, जस्ट द डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात करें, हाँ, अगर इसको वर्क डन से रिलेट करें, सो इट कैन बी क्वाइट यूजफुल कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है टू टेक दिस पॉइंट फ्रॉम दिस टू टेक दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, अगर उसी को मैं पर यूनिट चार्ज के बेसिस पे कर दूं, सो दैट इज जस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। Nirman Khan, you have finished more maths books than me. Actually, maybe I have read more maths books than you. But I see that most of them I have finished like on a repeated base. You can say like I have finished a 9th standard NCRT mathematics. Then I have gone through the R.S. Agarwal version of that. Then through the R.D. Sharma version of that. So on the same grade, I have like read many textbooks. That is the thing that I've been doing. But I guess you have been progressing through all this mathematics and you know way more mathematics than me. That is what at least I can predict. By the way, I would also like to ask you, Nirman Khan, that how long do you think it will take you finishing university physics from now on? Like say weeks or months or something like that? Because you are pretty forward. That's you are studying relativity currently. Jaya, Devil, BS, bro, is a space mat really exist? Well, space time exist karta hai, and that is why we have gravity. That is at least what we can believe. You can say that is how we have assumed it, or whatever you want to say. But that is how physicists understand this kind of thing. Dhruv Sangwan, what is the string theory? String theory basically it is the theory in physics कि जहाँ पे basically क्या होता है कि जो हमारे मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल लेवल पे पॉइंट नहीं होते हैं बल्कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। दैट इज अ स्ट्रिंग थ्योरी एंड इट इज क्वाइट यूजफुल क्योंकि ये जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स की कॉन्फ्लिक्ट की, अगर हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स को पॉइंट नहीं बल्कि स्ट्रिंग से अज्यूम करें।
Okay, and here was an answer. Yes, that was Nirman Khan. Yeah, Nirman Khan. I don't know months or so, but I won't study anything for few days. Oh, I see. Guess it will take me something like a week from now on. I see Nirman Khan because of exam. Yeah, I can understand. Okay, Zanki Indian, does Einstein-Rosen bridge make sense? Well, of course, it's a great theory. It's a great theory about Einstein-Rosen bridge called popularly called wormholes. And जहाँ पे स्पेस टाइम इतनी कर्व हो जाती है कि दो पॉइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं स्पेस एंड टाइम में, ताकि हम लोग एक पॉइंट से ऑफ इन स्पेस एंड टाइम या फिर स्पेस टाइम एज अ होल दूसरे पॉइंट तक सीधे पहुंच सकती है. एंड एज फार एज आई सी फ्रॉम फिजिक्स, yeah, it is possible. Although it might seem weird at first and pretty much like science fiction, but I believe in it, of course. Okay. On the way, Archimedes principle. Well, in physics, Archimedes principle is that any body जिसे हम लोग किसी भी फ्लूइड में रखते हैं या फिर डिप करते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो उस पर एक बुयंट फोर्स एक्ट करती है जो कि वेट के इक्वल होती है ऑफ द वाटर जो कि उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है. वाटर नॉट एग्जैक्टली वो फ्लूइड स्पेसिफिकली, टू बी मोर एक्यूरेट. इन मोस्ट केस में दिस फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू बी अ लिक्विड. Nicola, at the rate of SK Warnicke's electrostatic force and gravity have the same formula, so are they related with each other? Well, they don't have exactly same formula. एक difference आ जाता है कि electromagnetism में ये charge होता है, which are actually fundamentally causing these forces. Gravitational force में ये mass होता है. But yeah, they are like it is kind of is it a coincidence or what? लेकिन इनके जो formulas basically होते हैं ना, जो relation, they seem to be like so much related to each other, so we exactly don't know if they are related or something. But yeah, जब हमारे यूनिवर्स की बिगनिंग हुई थी तो सारे फोर्सेस into a single force unified थे. That's what we can say. So maybe that is the reason कि इनके जब when the forces were separated, so maybe that is the reason कि इनके formulas are so so looking so similar. Chaya Devi BS, bro, is light a wave or a particle? If it is of dual nature, then why we not like that? Why we are particulate in nature? Well, देखो केसेस में ना what happens कि कुछ केसेस में लाइट वेव है, कुछ केसेस में लाइट पार्टिकल है, कुछ केसेस में लाइट बोथ. वेल, एट द सेम टाइम बोथ नहीं होगी, ऑब्वियसली सेम टाइम पे बोथ नहीं होगी. आप भी शायद एक आप पार्टिकल हो, से हम लोग पार्टिकल्स हैं, लेकिन हो सकता है आप भी एक वेव बन सको at just the right frequency and stuff. So that is the thing. Maybe so maybe what is happening actual में light की ये wave and particle nature ना भी determine होता है कि according to just the wavelength, क्योंकि अगर wavelength of an electron and हाँ को particle nature में and अगर say sorry that is wavelength of an electron किसी भी particle and किसी भी wave की compare करें, so there's a tremendous difference. So maybe with the right wavelength, humans can also be part waves, but obviously we know that we are not going to have that much like that kind of wavelength and frequency. And so, of course, but maybe through scientific, what happens that just through scientific experiments we can actually change it. Nirman Khan, do you know Sasuke? He is my favorite character. Well, I don't exactly know him, but I guess he's from Naruto or something, right? Okay, Prince Thakur, how to drive three equations of motion? Well, actually, में मैंने उस पे वीडियो बनाया है, so you can just go and watch that. Since I'm not just going to drive it right here, well, but actually there are multiple ways. Uh,
प्रभाकर बादे, कैन वी कैच द साउंड ऑफ अ ब्लैक होल? अंदर से तो हम लोग साउंड ऑफ अ ब्लैक होल नहीं ले सकते कि अगर उसके अंदर की साउंड चाहिए, वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। बाहर का साउंड एक्चुअल में या वी कैन। ओके। डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिक्स सिंगेज कैसी है 11th के लिए? वेल एक्चुअल में मैंने सिंगेज ऑफ 11th ट्राई नहीं किया। Rather, I have read physics for scientists and engineers. It is rather a foreign textbook just by the publication of Singhage in India. So if you're talking about Singhage, I'm assuming you're talking about B.M. Sharma. So I haven't solved that, but I've heard it's pretty good. Nicola at the rate of SK Varnakis. What is the singularity? सिंगुलैरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं मैथ्स में एंड फिजिक्स में कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मैथ्स के लॉज एंड फिजिक्स के लॉज ब्रेक डाउन कर जाते हैं, दैट इज अ सिंगुलैरिटी, लाइक अ सेंटर ऑफ ब्लैक होल और बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स। Samarth Patil, hi Sarim, have you heard of direct delta function? It's very interesting. Yeah, and it's one of the things that I've been confused, say, for most of the time, and I still don't understand direct delta function yet. And that was the thing कि जब मैं वो जैक्सन की electrodynamics पढ़ रहा था, so the reason I dropped that book, the reason I dropped that book was introducing the function called direct delta function, because when I literally came across direct delta function and where it was used in that textbook, I was so shocked, like what function is this? Sandeep Kumar, hi Sarim, my question is what is redshift? Redshift basically होती है कि जब हम लोग, and it is much related to Doppler's effect, अगर हम लोग से किसी भी ऑब्जेक्ट के से दूर जा रहे हैं जो कि लाइट की सोर्सेज या फिर जो कि हमारी कोई भी काइंड की वेव्स एमिट करी, उस केस में बेसिकली क्या होता है ना कि जो वेवलेंथ हमें मिलती है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सोर्स वो इंक्रीज करती जाती है जब हमारी डिस्टेंस सेपरेट होती जाती है, यानी कि वी आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर और समथिंग। वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव हमारे लिए एक्चुअल में डिक्रीज कर जाती है, दैट इज व्हाट वी कैन से। एंड इन दिस स्पेसिफिक केस ऑफ अ लाइट, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जब वेवलेंथ इंक्रीज करती है सो दिस लाइट बिकम्स रेडर एंड रेडर, एंड दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। स्टूडेंट ऑफ अ टीचर, what is the need of the theory of everything? Well, obviously, you can say ki theory of everything. Say we can perform better experiments. We can say discover even more things, more and more things in physics. There are new. There can be new technologies. But again, if you are like not interested in physics, so you must be questioning that why are we even going after such a theory that can't be discovered, that was not discovered by Einstein or even Professor Stephen Hawking. But for those who actually like physics, obviously, theory of everything is like something important as oxygen. As oxygen. Um, Zobal Sahub, do you know about Yukawa nuclear theories? I'm sorry, I don't know about that yet. Jaya Devi BS, bro, can you please tell how to approach any JE question, especially in maths trigonometry? JE questions actually they are much problem solving skills. Obviously now they're also about concepts. आपके concepts clear है तो कितने clear है? So I'm just assuming कि concepts तो clear होंगे, and उसके अलावा you have great problem solving skills so you can just solve them. और उसको approach करने की बात, so first of all look at the information you have. पहले आपको देखना है कि आपके पास कितनी information है, उसमें से आपको जितनी भी information given है you have to look कि इससे आप कितनी information निकाल सकते हो, दैट इज कि जितनी इंफॉर्मेशन है उससे कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, एंड उसमें से व्हाट हैज बीन आस्क्ड यू जस्ट हैव टू रिपोर्ट दैट जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो आपको कैसे मिलेगी, एंड ऑल्सो
You can try assumptions in that. Most of the time तो work ही करते हैं कि आपके पास कोई भी question given है उसमें कोई भी assumption ले लो. Yeah, and that's the quotation called that if you can't answer a question, then that is an easier question that you can answer. That is the thing I'm saying. कि अगर यहाँ पे कोई आपके पास question given है and your assumptions लो, and by taking assumptions अगर आप उस particular say can be done. Now. Yes, the connection is getting unstable, and it's been long. So we'll stop it right here, and that was all. Thanks to you always, and bye. Good night.